Alright, the question is saying a map has a scale of 1 centimeter to 500 meters. ये स्केल आपको ये बता रहा होता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर is equal to 500 meters of actual. Now you have to express the scale of the map in the form 1:n. Whenever you get such a requirement that you have to express the scale in 1:n, what you do is you convert both the scales into centimeters. आप दोनों स्केल को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे. सो फॉर पार्ट 1 दिस इज़ 1 सेंटीमीटर टू 500 meters. So 1 meter is 100 centimeter. So 500 को जब आप कन्वर्ट करोगे into centimeter, you will multiply this by 100. So this will become 50,000. So 1:50,000 is the format that was required in the question. 1:n. This is the format 1:n. So part 1 is solved. Part 2, the requirement of the question is find the corresponding distance on the map. ठीक है, आपको distance on the map find out करना है. Distance on the map आपको find out करना है और actual distance given है. If the distance between two districts is 28 kilometers, so actual distance is given. Actual distance is 28 kilometers. 28 kilometers. Now using the ratio method, we can solve this question. We can write map is to actual. The map length is x because we have to find out, and the corresponding actual length is 28. Now we can input the scale. Acha, over here the scale is saying 1 centimeter to 500 meters. However, the actual distance is in kilometers. तो यूनिट का मैच होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक्चुअल में यहाँ पर किलोमीटर्स इनपुट कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी किलोमीटर्स होना चाहिए. अगर यहाँ मीटर्स इनपुट कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी मीटर्स होना चाहिए. ठीक है. So either we can convert this 28 kilometers into meters, right? 28 kilometers into meters will be how much? 1 kilometer is 1000 meters. So this will be 28,000 meters. And the scale is 1:500 meters. Now both units are same. So we will cross multiply. 500x is equals to 28,000. Now 500 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो 28,000 अपॉन 500, 0000 कट, 5 1s are 5 5s are 25, 3 remaining, 5 6s are 30. So the distance on the map is equal to 56 what? Kilometer, centimeter, meter, what? Centimeters. It is on the map. Map के ऊपर सेंटीमीटर होगा ना बेटा, किलोमीटर कैसे होगा? ठीक है, दिस इज सेंटीमीटर, राइट? मैप पे आप किलोमीटर्स तो ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज सेंटीमीटर्स. All right. Next, part 3. In part 3, the requirement of the question is if a jungle has an area of 12 centimeter square. Now over here the area is given. Alright, in part 3 the actual area is given. No, the area on the map is given 12 centimeter square. So whenever we are finding out the area, we make a new scale. By applying square on the existing scale. आपका existing scale क्या है? 1:500, right? 1 centimeter is to 500 meter is the existing scale. इस पर आप squaring apply कर दें on both sides.
So this will become 1 centimeter square, and this will become 250,000 meter square. Now, what is the requirement? The requirement is to find out the actual area in square kilometers. अच्छा, स्क्वायर किलोमीटर्स में अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको जो हमारा स्केल है इसको किलोमीटर्स में ही लिखें, इसको किलोमीटर्स में ही लिखें, ठीक है. So this will become 1 centimeter. Now 500 meter will be 0.5 kilometers, because divided by 1000, 500 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे, so 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट 0.5 किलोमीटर्स. इस पर आप स्क्वायरिंग अप्लाई कर दें तो आपका न्यू स्केल आ जाएगा. इस पर आप स्क्वायरिंग अप्लाई कर दें, दिस विल बिकम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम, देखिए 0.5 का स्क्वायर कैसे होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 5 25 होता है. यहाँ आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, यहाँ पर भी आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है. तो राइट साइड से आप ऑल टुगेदर टोटल 2 डिजिट्स हुए, तो राइट साइड से 2 डिजिट्स मूव करेंगे, 1 2. दिस विल बी 0.25 किलोमीटर स्क्वायर. दिस इज़ योर न्यू स्केल विच यू आर गोइंग टू यूज़ to find out the missing value. Now look, again using the ratio method, you can write map is to actual. अब यहाँ पर आपने ये जो न्यू स्केल है ना इसको इनपुट करेंगे, ठीक है. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is 0.25 kilometer square, and we are finding the actual area, so actual area we will take as x, and the corresponding is 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x विल बी इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले आप इसको विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करें. विदाउट डेसिमल 12 मल्टीप्लाई बाय 25 करें, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, सो 5 and 5 10, दिस बिकम्स 300. अब आप क्या करें, डेसिमल काउंट करें, डिजिट्स काउंट करें आफ्टर डेसिमल 2, आफ्टर डेसिमल 0. सो ऑल टुगेदर 2 डिजिट्स हैं, 1 2, यहाँ पर डेसिमल लगेगा, सो दिस विल बी 3. सो 3 किलोमीटर स्क्वायर इज़ द एक्चुअल एरिया ऑफ द जंगल.